So hi everyone. So let's discuss the part 2 of drainage system. So drainage system ro part 2 ta ame discuss aji kariba. So welcome to our channel the study kindle the learning hub. So ebe part 2 देखिबा कार ना drainage system रो. Okay, drainage system रो part 2 टा देखिबा. So part 2 रे हमें कोन रखिचे? Part 2 रे हमें रखिचे जेमेंति कि all lakes. Okay, all lakes means what? Major lakes. Okay, all major lakes हमें देखिबा इथरे. Correct, drainage system रे then हमरो complete हे जिवो. Okay, drainage system दा. तो let's start. So major lakes जदि कथा कहबा हम ओडिशा रो okay ओडिशा रो major lakes जदि कथा कहबा there are 4 major lakes. Okay, so चारिटा लेक अछि सबुठो major lake जोटा होची that is चिलिका. समस्त जानथिबे चिलिका विषय रे. Then आउ तीनटा जोटा अछि बहुत सारा पिला जान नथिबे but let's discuss that. Okay, second one is Onsupa lake. Third one is Lake Sara lake. Then asla last one that is Kanjia lake. Okay, Kanjia lake. So ei चारिटा ऊपर हमें डिस्कस करबा. तो फर्स्ट कम करबा ei तीनटा डिस्कस कर दोचे. Then हमें लास्ट को जीवा मेजर टा जोटा चिलिका कारण चिलिका रिलेटेड बहुत सारा इंपोर्टेंट डेटा अछि छोटा जोटा कि मो शेयर करबी तुम संगे. सो फर्स्ट हमें अनसुपा सारा कंजे लेक छोट छोट लेक ओडा ए विषय हम डिस्कस कर देबा. देन हम जीवा चिलिका. सो लेट्स स्टार्ट विथ द अनसुपा. सो फर्स्ट आसला कोडा हमरो अनसुपा लेक. ओके, अनसुपा लेक करेक्ट. अनसुपा लेक रो किछरा इंपोर्टेंट डेटा देखि देबा जेमे कि लोकेटेड एटा कोटा अछि बांकी ऑफ कटक. ओके, बांकी ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट रेटा अछि कटक डिस्ट्रिक्ट रो बांकी रेटा अछि कोटा अनसुपा लेकटा. करेक्ट. यार शेप टा मन रखो दैट इज हॉर्स शू शेप. ओके, हॉर्स रो माने कोन कोनती जेटा खुरा की जहां भी कोनती हॉर्स शू जोटा अछि ता शेप थाए अनसुपर शेप टा कोटा हॉर्स शू शेप. देखो एगुडा इंटरव्यू रिलेटेड भी बहुत इंपोर्टेंट. दैट्स व्हाई म सब जगह गोटे गोटे कर कहि दोची. देन this is a fresh water lake. Okay, so आमे जो चारिटा रिवर देखले सॉरी चारिटा लेक जो आमे कथा कहबा एबे चारिटा लेक कथा. So out of these 4 lakes Ansuva lake, then asla Sara lake, then asla amar Kanjia lake. These 3 are freshwater lakes. मन रखो these 3 are what? Freshwater lakes. Correct, freshwater lakes. Correct. Only the Chilika is what? Brackish water. So I will discuss about that. Brackish water kahin ki kuha jaye? Why brackish water? Correct. So ये सब discuss करिबा हमें. So let's complete the Onshore Lake first. So इटा देखले फ्रेश वाटर लेक टा Onshore Lake टा कोट लोकेटेड कोटे अछि that is बांकी रे in Cuttack district. तार शेप टा कोन हॉर्स शू शेप. Okay, then this is a fresh water lake also. तो यार लेंथ रहउ केते लॉन्ग एटा 3 किलोमीटर लॉन्ग. वाइड केते 1.5 किलोमीटर वाइड. ओके, सो अप्रोक्स एरिया केते सरफेस एरिया 141 हेक्टर. ओके ओके 141 हेक्टर. सो एते केवल मन रखि दियो रिलेटेड टू Onshore Lake. करेक्ट. देन वी विल गो फॉर द लेक सारा. करेक्ट, लेक सारा ये भी फ्रेश वाटर लेक जेमति कि म कहली प्रीवियसली. ओके, एटा भी फ्रेश वाटर लेक टा कोठी अछि ना नियर पुरी. ओके, पुरी रे अछि एटा. ओके, सो सारा लेक टा मन रखो. देन असला कंजिया लेक बहुत जन जानि थिबे बहुत जन जान नथिबे जे कंजिया लेक कोठी अछि. सो कंजिया लेक इज सिचुएटेड नियर भुवनेश्वर. कोन कहली नियर भुवनेश्वर. ओके, नियर भुवनेश्वर मींस व्हाट? इट इज लोकेटेड इन नंदनकानन. ओके, इन नंदनकानन रे अछि एटा. इन नंदनकानन in which district? Nandana Tampa Co district jauchi, that is Cuttack district. Okay, in Cuttack district in Nandankana Kanjia lake is situated. Correct. So this is also a freshwater lake, as I have told you. Freshwater, it be freshwater lake ta. Okay, यार केते surface area केते अछि 105 hectare. एटा एते important no, but फिर भी तुम कहि दोछि. Okay, 105 hectare. So near Bhubaneswar अछि freshwater lake अछि एटा नंदनकानन भितर अछि, which is which belongs to Cuttack district. Okay, so
फर्स्ट सो फर्स्ट तीनटा लेक हम देखते सो लास्ट जोटा मेजर लेक अच्छी दैट इज चिलिका चिलिका ऊपर पूरा बहुत भल से हम डिस्कस करबा सो लेट्स स्टार्ट सो वेलकम टू द लेक चिलिका सो दिस इज द चिलिका मैप ओके देखि परथिबो बहुत जन देखि नथिबो बोधे देखो चिलिका तो बहुत जन देखिथिबो ओके दिस चिलिका मैप टा मु डाउनलोड करके तुम देखौची ओके चिलिका सो चिलिका विषय जानिया पूर्व गोटे जिन आमको जाना दरकार जे तार पड़ोसी को जिला अच्छा ओके को जिला देखिए यहाँ कौन पास कर लगिक अच्छी को जिले में ये देखिए दैट इज गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओके यू कैन सी हियर द गंजाम डिस्ट्रिक्ट देन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट देन आसला आमर कौन पुरी डिस्ट्रिक्ट ये तीन टा नयगढ़ एपटे रही से नुह पड़ोसी सो तीन टा ये अच्छे केवल तीन टा डिस्ट्रिक्ट ही अच्छे सो 3 डिस्ट्रिक्ट देके पास करछि okay so if you will define chilica then chilica is a brackish water lake and a shallow lagoon okay तो फर्स्ट पॉइंट हम पहले कोन ब्राकिस व्हाट इज ब्राकिस समस्त मन आस्थिबो डाउट जे ब्राकिस कोन ब्राकिस वाटर सो किछि आस्नथिबो राइट व्हाट इज ब्राकिस वाटर लेक राइट तो चिलिका इज ए ब्राकिस वाटर लेक एंड ए shallow lagoon देन सेकंड आसला lagoon व्हाट इज द lagoon मैन ओके बुझे भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत इंपोर्टेंट होड़ा पचारि पारंते व्हाई चिलिका इज कॉल्ड एज ब्राकिश वाटर लेक so can you explain so then पचारि पारंते what is do you know what is lagoon and why चिलिका is called as the shallow lagoon can you explain okay so इतरा क्वेश्चन पचारि पारंते so let's start so चिलिका is a brackish water lake and a shallow lagoon that is spread across what the districts Ganjam Khurda and Puri got my point so why it is called as brackish water and lagoon we'll see that so first thing why it is called as brackish water lake so what it means brackish mean what brack so brackish means the mixture of or the mixture of what freshwater lake fresh water plus salty water ओके मीन्स एटा टिके सल्टी रहबो बट फ्रेश वाटर टू टिके अधिक सल्टी रहबो आ कोन ओशियन टू समुद्र रो सल्टी जेतिकी समुद्र जेतिकी सल्टी थाए ताटू टिके कम रहबो बुझि पालो मीन्स फ्रेश वाटर आ सल्टी वाटर रो मिक्स डाटा कोटा ब्राकिश so if you will go for the definition then brackish water also sometimes termed as what brack water it is the water occurring in a natural environment एटा कोन होची गोटे नेचुरल एनवायरनमेंट रे कोन होची प्रोड्यूस होची correct form hochi so brackish water also sometimes termed as what brack water termed as brack water and it is the water occurring in a natural environment having more salinity than fresh water but not as much as sea water जेतिकी salinity थाए तार मात्रा जेतिकी थाए sea water रे सेतिकी न थाए but तार कम थाए but it is salty get my point so it is brackish water you can reply this definition to the interviewees interview जति पचारले ताम कहि परबेटा what is brackish water why it is called as brackish water okay lake then asla lagoon why it is called a lagoon देखो lagoon means कोन Italian word ro eta derive होची so lagoon is a word which is derived from a Italian word that is what lagoon means what lake or pond लेक और पॉन्ड या को कौन कहा जाए लेक कहा जाए और पॉन्ड यार माने होची लगुन माने ओके सो व्हाट इज लगुन सो लगुन जो होता है ना सो लगुन्स जो थाए लगुन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ वाटर ओके बाय सैंडबैग्स सैंड बाली फाली रे ये डिवाइड मर कोन बैरियर बाली रो बैरियर रे ये कोन सेपरेट होथिबो large water body ru या तो आउ किछि बैरियर जेमते कोरल रीफ्स और अदर नेचुरल बैरियर थाई पारे ओके सो यू कैन से lagoons are separated so see the map को देखो lagoons this is a lagoon okay lagoons are separated from a large water body you can see here this is a large water body correct this is a lagoon got my point so eta hochi gote lagoon this is a large water body so large water body ru eta kono सेपरेट होची बाय ए सैंड बैरियर हो कि कोन कोरल रीफ्स हो जोठी किछटा बैरियर थिबो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज lagoon एटा बहुत इंपोर्टेंट तुम आराम से कोन इंटरव्यू रे
आंसर दे पारे यार. Okay, why it is called as lagoon. Correct? Got my point? Now next. आउ कौन कौन डेटा अच्छी जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट. आउ कौन ओडिशा जेहेतु ओडिशा पिला सो जानिबा दरकार एते बड़ गोटे लेक अच्छी ता विषय तो इनफॉरमेशन रखा दरकार. सो बट मोस्ट प्रोबेबली मैं एग्जाम रिलेटेड ही कहूँ. ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम निजे भी फील करें जे हाँ एटा एग्जाम रे आसी पारे, इंटरव्यू रे भी पचारि पारंती. सो नेक्स्ट टाइम जीवा कौन आउ किसी डेटा को. ओके, नाउ इटी देखो देखुथिबो मैप रे ये सब मार्कटा देखुथिबो बहुत सारा आसिक कौन चिलिका रे पड़ुचंदी मिसिचंदी. ओके, सो ए लॉट ऑफ रिवर्स और रिवुलेट्स आर merged into Chilica. If you will say the data from Wikipedia, then 52 rivers or and rivulets merged into Chilica. Okay, केतटा 52टा. ओके, रिवर्स माने लार्ज वाटर बॉडी ओडा जोडा रिवर ओडा नदी देखिथिबो. ओके, रिवुलेट्स मींस स्मॉल वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम कहि परियो. करेक्ट. सो 52 टा एबडे जो देखुचो कोन मैप रे एगुडा को देखि परियो. ओके, 52 टाइम थे रिवर्स और रिवुलेट्स आसी कि मर्ज होइचन कोटे चिलिका रे. ओके, देन विल गो टू द सबुड इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा सेटा पे देखिबा. सबुड इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा सेटा देखिबा दैट चिलिका इज द फर्स्ट Ramsar site of what? India and Asia also. Correct? Asia और India रो first Ramsar site कथा जो देखिबा that is what? Chilica. Okay? सो बहुत जनकर मन क्वेश्चन आस तो कौन रामसर व्हाट इज रामसर साइट जो माने फर्स्ट टाइम देखुथिबे वीडियो और फर्स्ट टाइम पढुथिबे ज्योग्राफी डेफिनेटली से मानकर क्वेश्चन आसीबो नियाती समस्त मन आसे. सो व्हाट इज रामसर साइट्स. ओके, सो रिसेंटली गोटे आईएएस इंटरव्यू भी देखुଥିଲି सिधे पचरा हैतला सो व्हाट इज रामसर साइट, व्हाट इज रामसर कन्वेंशन. ओके, सो मु चाहि भी निहाती मु सेई डेटा को तमन संगे शेयर करबी. सो फर्स्ट रामसर साइट फर्स्ट मन रखियो जे फर्स्ट रामसर साइट जोटा इंडिया रो एशिया रो. ओके, दैट इज एशिया सॉरी दैट इज चिलिका. केबे हितला एटा 1 अक्टोबर 1981 ने हितला. द चिलिका इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया एंड एशिया on 1 October 1981. ओके, 1981 रे को डेजिग्नेट करा जायतला. सो एबे देखिबा व्हाट इज रामसर साइट, राइट? व्हाट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रामसर साइट. ओके, और व्हाट इज रामसर कन्वेंशन तापर टिके डिस्कस कर देबा. सेटा म एक्चुअली म डिस्कस करते थे इंडियन ज्योग्राफी रे बट फिर भी एट कर दोची. ओके, देखिबा रामसर. सो देखिबा रामसर साइट. So, Ramsar site. Ramsar means this is a city. It is a city. Ramsar is a city in Iran. Okay, it is a city in Iran. Correct. Iran is a city that is Ramsar. So, Ramsar city re, for the first time Ramsar Convention was signed. Ramsar Convention गोटे अछि जोटा कि फर्स्ट टाइम पे साइन करा हैतला कोटे Ramsar city रे in Iran रे. ओके, सो एटा केबे करा हितला डेट बहुत इंपोर्टेंट म कहि रखुची बहुत इंपोर्टेंट एटा. ओके, बहुत इंपोर्टेंट एटा म शेयर करची. ओके, दैट इज 25th February 1971 रे for the first time the Ramsar Convention was signed in the city of Ramsar, that is Iran. Iran रे एटा कोन हितला साइन हितला for the first time. So जदि क्वेश्चन ने पचारंते कहि परियो why it is called as Ramsar site. Okay, correct, because the Ramsar Convention in 25th February 1971 for the first time signed in Ramsar city of Iran. That's why it is called as Ramsar Convention. Then they will go to the next question, that is what is the Ramsar Convention. Do you know about anything? What is the Ramsar Convention? Yeah, then Ramsar Convention kon seta tome ebe kahiba. So let's see what is the Ramsar Convention. Let's see what is Ramsar Convention. Okay, so Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. Sustainable
use of wetlands. Okay, first is what? International treaty टा ଗୋଟେ Ramsar Convention टा कौन ଗୋଟେ international treaty टा for the conservation and what sustainable development of what? Wetlands, correct? Wetland गुड़ा कर तुम्हारे भी क्वेश्चन है तो what is wetland man? So wetland रो sustainable and conservation पाई development पाई कौन Ramsar Convention बनाइला. So जानी पड़लो Ramsar Convention जब तुम पहुंचा वाला what is Ramsar Convention, then you can say easily. So sir, Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. So it has signed for the first time in 25th February 1971 in the city of Ramsar in Iran. That's why it is called as Ramsar sites. So they can ask you what is wetland, wetlands, what do you mean by wetlands? Wetland भाई क्या होता है, ठीक है ना? इटे जो पहुंच रहा what is wetland, then देखो a land area if saturated by water, then it is called as what wetlands. Okay, then it is called as wetlands. आउ केवल सैचुरेटेड है कि नहीं, बहुत प्लांट्स एठी थांती, बहुत एनिमल्स कोन एठी गोटे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाए, करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड एज wetland. Okay, so wetlands are the wetlands. Did you get my point? The lands which are saturated by water is called as wetlands, correct? So for which a lot of varieties of plants and animals can survive there in the wetlands. So ये गोटे कोन बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाए जा पई कोन रामसर कन्वेंशन देन से wetland को देखे जे wetland ता जदी बहुत सारा कंडीशन एंड क्राइटेरिया को से फुलफिल करछि, then it will be called as the Ramsar site, it will be designated as the Ramsar site. So एमिति केस रे ही हमर कोन चिलिकाटा for the first time पई Ramsar site हिसाब रे घोषणा करा जायतला for India and for the first time in Asia, correct? इठी आउ गोटे पॉइंट आछी जे हां ओके भाई आपन कहिले जे हां for the first time first Ramsar site of India and Asia is like Chilika. Okay, we got to the point. So world ro first Ramsar site कोटा, world ro first Ramsar site कोटा, that is the Coburg Peninsula. it लिखि दोची, that is the Coburg Peninsula, correct? That is the Coburg Peninsula. So this is the first Ramsar site of the world which is situated in Australia rachita, okay, which is situated in Australia. So you should remember that first world quota, first Asia and India quota, that is Chilika. So या सिर्फ कहितली, correct? So आउ किछटा इंपोर्टेंट भी जिंस अछि. सो यार जदि शेप कथा देखबा, यार शेप कथा जदि कहबा, व्हाट इज द शेप ऑफ चिलिका, जेमिति हम देखतले शेप ऑफ Onshore Lake, that is horseshoe shaped, सेमिति यार भी शेप अछि, that is pear shaped. एटा केवल मन रखो, ओके? that is a pear shaped चिलिका रो कोन अछि ना pear shaped, करेक्ट? एंड यार लेंथ एंड विड्थ से जिंस भी देखि देबा, यार एरिया केते बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो. सो चिलिका कथा जद कहबा, चिलिका, so हमें देखिले जे 52 number of rivers and rivulets merged into Chilika. So north through south कथा जद देखिया, maximum length हर केते 64 किलोमीटर. just remember this, okay? केवल रिमेंबर कर दियो, हां 64 किलोमीटर. ओके, जदी पचारले भलो कथा न एते डेप्थ रे पचरवाटा एते नुह, बट सरफेस एरिया जद कथा कहबा, that is 900 किलोमीटर स्क्वायर टू 1165 किलोमीटर स्क्वायर, करेक्ट? किलोमीटर स्क्वायर. So maximum depth केते 4.2 मीटर, करेक्ट? Then another important thing, एटा बहुत important, okay? एटा पचरे परंती जे माउथ ऑफ चिलिका लेक, माउथ ऑफ देखो एट लिखा है माउथ ऑफ चिलिका लेक. ए चिलिका लेक रो जो माउथ टा याको कोन कहै छै, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउथ ऑफ द चिलिका लेक? दैट इज मगरमुख, करेक्ट? सो माउथ ऑफ चिलिका लेक एट बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड एज मगरमुख. एटा मन रखो. देन आउट अछि सिस्टर लेक ऑफ चिलिका. चिलिका गोटे सिस्टर लेक अछि, कोट अछि सेटा मु कहिबे, सिस्टर लेक ऑफ चिलिका. चिलिका गोटे सिस्टर लेक अछि जोटा कोट अछि जापान रे अछि,
जापान रे ता ना कोन सरोमा लेक ता ना होची कोन सरोमा लेक होची जोटा जापान अछि दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट सिस्टर लेक ऑफ चिलिका करेक्ट एबे मैक्सिमम बहुत सारा कोन डेटा में कवर करि सारलेनी नाउ विल गो फॉर सम scenic beauty of चिलिका आ किसी टूरिस्ट प्लेस जस्ट खाली ओवरव्यू कर दबा मन रखो सेटा केवल इंटरव्यू पई एंड कोन फॉर योर नॉलेज एग्जाम रे भी पचारि पारे सो किछटा टूरिस्ट प्लेस अछि scenic places भी अछि चिलिका सो चिलिका इज फेमस फॉर टूरिस्ट प्लेसेस देखिवा टूरिस्ट प्लेसेस देखिवा ओके नियर चिलिका जस्ट ओवरव्यू कर दियो जस्ट फॉर यू सेक ऑफ नॉलेज ओके जमती गोटे होची कोन कालीजाई टेंपल अछि करेक्ट देन हम रहला नळबण बार्ड सेंचुरी एटा बहुत इंपोर्टेंट नळबण सो नळबण बार्ड सेंचुरी भी अछि ओके देन हमर असला कुडा सातपड़ा व्हिच इज सातपड़ा हु बिलोंग्स टू गंजाम एटा मन रखिबा निहाती चोरी से मानको इंटरव्यू रे पचार दे पारंती सातपड़ा व्हिच इज फेमस फॉर व्हाट dolphin okay satapura is famous for what dolphin namar asla कोन रंभा बे सो ऋषिकुल्या बीच जोटा अछि ऋषिकुल्या बीच से बीच रे कोन करंती हमरो सो ऋषिकुल्या बीच कथा जद कहबा व्हिच इज लोकेटेड नियर रंभा सो सेठी कोन करंती ऑलिव रिडली सी टर्टल्स ओके हमर जो कॉइन चुगुडा आसंदी ऑलिव रिडली जरना ऑलिव रिडली सी टर्टल्स मानकर नेस्टिंग सेट थाए बहुत माने बहुत अधिक नंबर से सेठी नेस्टिंग थाए ओके सो एग्जैक्ट नंबर टा मोर मन नहीं फिर भी सम लाख्स आई थिंक लास्ट टाइम 3.5 lakhs नेस्टिंग आई थिंक इट वाज देयर इन ऋषिकुल्या बीच लास्ट ईयर जदि डेटा जानछो एक्चुअली सेटा तमे कमेंट रे देई परिबो ओके एंड फॉर रिलैक्सेशन रंभा पांथनिवास भी अछि रिलैक्सेशन पई कोटा अछि रंभा पांथनिवास ओके पांथनिवास भी अछि ओके सो एक्चुअली रंभा बेटा जब कहबो पूरा नेचुरल ब्यूटी पे बहुत इंपोर्टेंट बहुत भलो प्लेस टा ओके देन आउ किछटा देखबा जेमिति कि हमर ब्रेकफास्ट आइलैंड अछि देन हनीमून आइलैंड अछि बार्ड्स आइलैंड अछि राजहंस आइलैंड अछि देन मंगल जोड़ी गोटे जगह अछि दैट इज अनदर बार्ड्स पैराडाइज सेटा ओके मंगल जोड़ी एटा मन रखते मंगल जोड़ी रे कोट अछि मंगल जोड़ी दैट इज नियर गोटे चिलिका दैट इज अनदर बर्ड पैराडाइज ओके सो एटा सब कोन टूरिस्ट प्लेस गुड़ा देन सीनिक ब्यूटी भी अच्छी तो ये जिनसा केवल मन रखी था जे गंजाम डिस्ट्रिक्ट टू बिलोंग करछंती से मन यार तो आउरी बहुत इंपोर्टेंट जो भी इंटरव्यू से जब ASO हो किंबा व्हाट OAS हो ASO तो इंटरव्यू नहीं सो OAS हो देन हमर कोटा OPSC जो भी एग्जाम हो ओके तापे एटा बहुत रिलेटेड देन सिविल रो OPSC व्हाट AWPR पई AW रो जो भी एग्जाम आछो तापे भी बहुत इंपोर्टेंट सो ए सब जिनसा को मन रखते सो नाउ वी कंप्लीटेड आवर व्हाट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ओडिशा सो जदी आउ का पाकर किछि एडिशनल थिंग्स अछि जेमति कि देखिबा डैम्स ऑफ ओडिशा सो नेक्स्ट वीडियो रे हम करबा आउट पार्ट रे सो दिस वाज द ड्रेनेज सिस्टम सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कहा पाकर जदी एडिशनल इंफॉर्मेशन किछि अछि प्लीज शेयर इन द कमेंट ओके दैट विल बी बेनिफिट फॉर अदर स्टूडेंट्स आउ को टॉपिक ऊपर तमे चाहू जो जे वीडियो आसु तो सेटा भी तमे कमेंट सेक्शन में दियो सो दैट वी विल बैक विथ न्यू टॉपिक्स ऑन दैट एज योर डिमांड सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब करो आ तमर रेस्पॉन्स जब तुम वीडियो भल लागिला डेफिनेटली लाइक करो ओके